परम शांति। ये 7 फरवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। एक मुख्य बाबा का टॉपिक रहता है कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा शिव अथवा पानी की गंगा। आप देखेंगे इंडिया में हर प्रदर्शनी में इसका चित्र होता ही है। तो मुख्य सेक्शन है ये। तो आप जानते हो कि इंडिया में तो नदियों का कितना महत्व है और कितने मेला लगते हैं, और धर्मों में भी पानी का बहुत महत्व रखते हैं। कई मुरलियों में बाबा क्रिश्चियनों को याद करता है कि जब लोग क्रिश्चियनाइज करते हैं ना, बेबी है अथवा कोई बड़े क्रिश्चियन बनते हैं, तो उनको पानी में डुबाता है, क्योंकि बाइबल में दिखाया है कि क्राइस्ट ने अपने को वो नदी में गया था। और जैसे नया जन्म, तो नया जन्म भगवान के जो नाम का जन्म, क्रिश्चियन बनने का जन्म, तो लोग ऐसे ही नदियों में जाते हैं अथवा कुछ फुल नदी नहीं करते हैं, परंतु चर्च में कुछ पानी जैसे सिर पर डालते हैं, तो क्रिश्चियनाइज ऐसे करते हैं। तो और धर्मों में भी, बौद्ध धर्मों में भी पानी का महत्व रहा है। पानी का सिंबल इम्पोर्टेंट है भक्ति में। तो बाबा समझा रहा है कि ये सिंबल का मीनिंग क्या है। दूसरा आप देखेंगे कि बाबा का जो है वो है भक्ति में मिलन का, संगम का, मिलन का बहुत महत्व रहता है। तो देखो, आपको याद होगा 1-2 सप्ताह पहले कई मुरली महाकुंभ के ऊपर चली थी। तो बाबा राय दे रहा था कि क्या क्या समझाना है। तो इलाहाबाद में वो गंगा जमुना मिलती है, और फिर बोलते हैं कि एक गुप्त नदी सरस्वती है, तो वो 3 मिलते हैं, तो संगम हो जाता है। तो जहाँ संगम होता है इसका महत्व रहता है। तो बाबा समझाते हैं कि कौन सा सिंबल है, कौन सा समय का सिंबल है। और फिर अब देखेंगे कि कई ऐसे मेला लगते हैं जहाँ नदी सागर से मिलती है। तो देखो, ये भी एक ड्रामानुसार भारत की जियोग्राफी में भी और जो प्रैक्टिकल में, रियलिटी में हुआ है, वो मिलता है। और वो है ब्रह्मपुत्र सागर से मिलती है बंगाल में। और ब्रिटिश ने उसको डायमंड हार्बर भी नाम रखा था। तो शिव बाबा हमें समझाता है कि उनका अवतरण हुआ था बंगाल में। जब ब्रह्मा बाबा कलकत्ता में था, तब शिव बाबा का अवतरण हुआ। क्योंकि एक नियम होता है, सूर्य कहाँ उदय होता है? ईस्ट में होता है ना। तो ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ ईस्ट में, बंगाल में। फिर यज्ञ शुरू हुआ नॉर्थ वेस्ट में, परंतु सूर्य उदय हुआ ईस्ट में। तो वहाँ ही ब्रह्मपुत्र नदी सागर से मिलती है। तो इसका बहुत महत्व है। मेजॉरिटी नदी तो गॉडेसेस की है, परंतु ब्रह्मपुत्र मेल का है, वो बड़ी नदी भी है। तो बाबा समझा रहा है कि ये सब इस समय का यादगार है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से मिलता है, तो ये एक महाकुंभ
हो जाता है, बड़ा संगम होता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भगीरथ भी है ना, तो उन्होंने ही गंगा हम सब के लिए धरती पर लाया है। उनकी भक्ति ने शिव बाबा को खींचा है। और जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिल जाते हैं तो बाप दादा बन जाते हैं। तो फिर शिव बाबा की उत्पत्ति, पालना और विनाश की शक्ति भी प्रकट होती है। तो गीता में बार बार ये लिखा हुआ है कि भगत मुझे प्रिय लगते हैं, फिर ज्ञानी मुझे प्रिय लगते हैं। तो बाबा ये बात उठा रहा है कि भगत बुद्धि सोचती नहीं है बस, और नदी में जाते हैं तो वो भी फॉलो करते हैं ना। तो हम कितने जन्म में से करते आए होंगे। और दूसरी बात के भगत बुद्धि कुछ बात मांगेंगी परंतु जानेंगी नहीं कि वो वास्तव में क्या चीज़ है। तो देखो, कृपा करो, दया करो, परंतु कृपा, दया, रहम करो, वो किसको कहा जाता है वो मालूम नहीं होता। तो बस हम पुकारते रहते हैं, रहम करो। क्या चीज़ है रहम, वो मालूम नहीं है। तो बाबा समझा रहा है कि ये रहम, ये कृपा केवल संगम युग पर मिल सकती है। तो द्वापर कलयुग में हम पुकारते रहते हैं और शिव बाबा रहम कर ही नहीं सकता। तो हम गिरते ही रहते हैं ना, दुखी होते जाते हैं। और कृपा किसको कहता है? भगवान की कृपा इस पढ़ाई मुरली। तो यह भी कभी ख्याल नहीं आया था कि कृपा का मतलब है एजुकेशन। तो बाबा समझाते हैं कि नदी में डुबकी लेना, इसका मतलब क्या है? ये सिंबल है भक्ति का। तो ये जो रोज की मुरली है ना, मुरली बाई मुरली, कितनी मुरलियां हैं? तो वो एक नदी है ना। और आप रोज, क्योंकि हर वक्त का महत्व होता है ना, कि एक कोई ना कोई मुहूर्त पर यदि आप स्नान करेंगे तो इसका महत्व रहता है। तो हर दिवस का जो मुरली मिलता है ना, वो एक डुबकी है, वो एक स्नान है। और उस मुरली का, उस दिवस का मुहूर्त होता है। तो उस दिवस का की मुरली का लाभ लेना होता है। तो जो रोज मुरली सुनते हैं वो रोज पावन होते जा रहे हैं, क्योंकि वो रोज डुबकी इस ज्ञान मुरली, ज्ञान नदी डुबकी लगा रहे हैं। और ये नदी कहाँ से निकली है? ज्ञान सागर शिव बाबा से निकली है। ठीक है ना। तो बाबा समझा रहा है कि आपकी भी अभी संगम हो रहे हैं बाबा से। आपस में भी आप मिलते हो, नदी दूसरी नदी से भी मिलती है, कई तालाब भी हैं, तालाब भी बनते हैं, मतलब गहराई में भी जाते हैं। तो ऐसे हमें ज्ञान में डेवलप होना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब है सिंबल्स। फिर दूसरा बाबा मेंशन कर रहा है जो अव्यक्त नाम दादियों को मिले थे। कराची में ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया था कि सब दादिया दादाओं का नया जन्म मिला है, तो उनका नया नाम भी देना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने एक संदेशी को कहा था कि सूक्ष्म वतन में जाओ, शिव बाबा से पूछो और शिव बाबा से नाम का लिस्ट लेके आओ। तो वो लेके आई थी। तो जो आप मेजॉरिटी दादियों का जो नाम सुनते हो, वो शिव बाबा ने सूक्ष्म वतन से भेजा। जैसे रतन मोहिनी दादी, तो वो नाम सूक्ष्म वतन से।
शिव बाबा ने भेजा है। तो ऐसे कईयों का नाम चेंज हुआ। मैं समझता हूँ कि दादी प्रकाश मणि का नाम रामा था, लौकिक नाम, और दादी गुलजार का नाम शोभा, आई थिंक। तो जो लौकिक नाम था वैसे भी जब बाबा के बने थे तो ब्रह्मा बाबा जैसे दूसरे नाम से बोलते थे। तो बाबा हमेशा चाहता था कि जो बेटियां हैं वो बेटे समान चलाता था, कि ये जो बालकी है बालकी जैसे नहीं लगे, वो बालक जैसे काम कर सके। तो दादी प्रकाश मणि को प्रकाश मणि वो था अव्यक्त नाम जो शिव बाबा ने भेजा था, परंतु ब्रह्मा बाबा उनको कुमार का कहता था कि कुमार जैसे जैसे बेटा है, इस प्रकार से देखता था। और दादी जानकी का नाम जानकी ही था, और जो अव्यक्त नाम आया था वो था मनोहर शांता। शिव बाबा ने वो नाम, क्योंकि दादी का तो इतना साइलेंस पावर बिल्कुल एक्यूरेट हम सब ने अनुभव किया कि कैसे हम सब का भी मन दादी ने साइलेंस पावर से जीत लिया, और दादी ने तो अपना मन पर भी साइलेंस पावर से कंट्रोलिंग पावर दिखाया। परंतु ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नाम का उपयोग नहीं किया था। तो ब्रह्मा बाबा ने बस फीमेल से जानकी से जनक कर दिया था कि वो भी बेटा है, बेटी नहीं है। क्योंकि दादी सुनाया करती थी कि जब वो छोटी थी तो बहुत जैसे नाजुक स्वभाव था, फीलिंग्स में होती थी, तो बाबा ने सबको स्ट्रांग कर दिया। तो जनक मामा बाबा दोनों जनक नाम से पुकारते थे, और जब बाकी जो दादियाँ थी दीदी थी तो उनको जानकी बहन कहा कहते थे। तो किसी ने मनोहर शांता का उपयोग ही नहीं किया, तो इसलिए वो नाम जानकी ही रहा। बाकी मेजॉरिटी जैसे दादी मनोहरन इंद्र थी, शांता मणि दादी, ये सब नाम जो है ना शिव बाबा ने भेजा था सुखशवतन सिंह। और लास्ट में आपको याद होगा ये पूर्व सप्ताह के एक स्लोगन था कि निर्विघ्न रहना है तो दुआओं का खाता जमा करो। तो आज बाबा ये राज फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि आगे बढ़ने का एक मुख्य साधन है दुआओं को जमा करना। वो एक रॉकेट का काम कर सकता है। तो कल हम सब ने सुना कि बाबा क्या देखना चाहता है, कि हम होली हंस बनते जावे, हमारे शरीर कैसे हम शुद्ध रखें, कैसे चलावे, फिर मन को तो मनमना भाव रखना है, दिल को सच्ची निस्वार्थ बनानी है, हमारी नीयत बिल्कुल निस्वार्थ हो जावे, हम योग द्वारा संपन्न हो जावे, तो फिर अपना अहंकार इसमें मिक्स नहीं होगा, नहीं तो कुछ नियतों में मिक्सचर हो सकता है। और फिर सबन संपर्क में संतुष्टता, और कोई किसी की बात पर किसी पर नफरत नहीं करनी है, तो फिर सब हल्के रहेंगे, मैं भी हल्का रहूँगा। तो हम देखते हैं कि बाबा क्या चाहता है, और यदि हम करते हैं तो माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मामा, वो बस यही चाहते हैं कि जो मुरली में बाबा ने कहा हम धारण करते जावे। तो फिर दुआ देते हैं, अंदर ही अंदर दिल को आराम मिलता है, और अंदर आत्मा परिवर्तन होता जाता है। और फिर ब्राह्मणों
से भी दुआ लेनी है, लौकिक परिवार से भी दुआ लेना है, लौकिक जॉब करते हैं उनसे भी दुआ लेनी है, बाकी समाज से भी दुआ लेनी है, सर्व प्रकार। कई एनिमल्स को भी रखते हैं तो उनकी भी दुआ, नेचर की भी दुआ, हमें सब की दुआ इकट्ठी करनी है, क्योंकि सब दरिजन की सिखाती थी कि सब प्रकार की दुआ का अपना महत्व होता है। तो हमें ये जमा करना है। मुख्य है कि नियत निस्वार्थ हो, क्योंकि यदि कोई न कोई स्वार्थ है तो फूल जमा नहीं होगा, हम कोई न कोई कच्चा फल खाते रहेंगे। तो उसके लिए योग द्वारा दिल को संपन्न करना पड़ेगा। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 7th of February, 2022. One of the big topics that Baba takes up and asks us to take up is, who is the purifier? Is it the Supreme Father, the Supreme Soul Shiva? Or is it the rivers? And in all of the exhibitions in India, they have a picture on this, and maybe like even a section on this. You might remember that 1 or 2 weeks ago we had a series of Murlis around the Kumbh Mela, and that occurs the Great Kumbh occurs every 12 years in the city of Allahabad, and it's where the Ganges and the Yamuna River meet. And there's the legend of the Saraswati, an underground river, also meeting. And so that's where that's celebrated. And Baba was saying that you should focus on explaining there as to whether the rivers are the purifier. And so Baba is taking this up and explaining to us the significance as well, because all of these things of Bhakti are symbolic of something that's happened at confluence age. And so Baba explains that you've been bathing in water for every birth, but the soul doesn't become pure through that. The energy of water purifies the body, and we feel like sometimes we've got stressful energy in our body, and then we have a shower and we feel much more relaxed. So water has its own energy, and it seems to be able to also clear energy from the body, or from maybe even from the subtle body. But Baba explains to us that there's only one method to clean the soul, and that is to remember Shiv Baba. And so Baba is saying to us that you've got to question, get people to ask questions. Now I think in most traditions there's some belief in the purification power of water. In some Murlis, Baba remembers Christian baptizing as well. And when a Christian is like reaffirming themselves as a Christian, like they might have been born a Christian, but then later in life they are more consciously choosing to become a Christian, then they might get baptized, and again that might involve them bathing, and it's like this concept of being born again in that way. So water has got a lot of symbolism, and Baba explains that also as a devotee we do these things really without thinking, and then we also ask for things that we don't know the meaning of. So for example, we would ask for mercy, and Baba is saying today that if someone is asking for God's mercy,
you should challenge them and ask them, what does mercy mean? What does it look like? And again, I'm not sure we, excuse me, as devotees, we really define these things. We just keep asking for mercy, don't we? And asking for blessings and asking for compassion. But what does that look like? What is it? And it's only when Baba comes and explains to us that God's mercy is this education. It's this Murli. And that's something we didn't expect. And so Baba is saying to us that it's only now, at the confluence age, that you can get this mercy. And so the whole of the Copper and Iron Age, we've been calling out for this mercy, and it couldn't have been given to us. It only happens now. So what is the river? What is the purifier? It is these series of Murlis. We've got a river of knowledge, haven't we? Every day we're dipping in to the river of knowledge. This river, where does the Murli flow from? It flows from the ocean of knowledge, from Shambhavu. And then who does he combine with? He combines with the great river of knowledge, Brahma. And it's remarkable that the way the drama has worked is that Sheb Baba tells us that he incarnated into Brahma when Brahma was in Calcutta. And that part of India, Bengal, is where the Brahmaputra river meets the ocean. And so the British had named that place Diamond Harbour. And so it's amazing that in the geography of the land and in the spiritual significance, the great river Brahma meets the ocean at that place in Bengal. And as we know, the sun rises in the east. So Shiv Baba, the son of knowledge, he had to come in the east side of India. And then the yajna was started in the northwest, but the sun rose in the east originally. And out of the rivers of India, there are very few that are male. Generally, rivers are considered to be goddesses. But the Brahmaputra River is one of the few male rivers. And it's a long one, a big one as well. So Baba is saying that this is the meeting. So a confluence age, you have many confluences. And in Bhakti, these confluences are considered very important. Throughout India, they give a lot of different importance to different types of meeting places. Sometimes Baba mentions even when roads meet each other. And my mother, Ranjan Ben, she used to share as well that when she was young, they used to also do that where there was a crossroads or a fork in the road, they would go and light some candle and leave some offering, because they believed that that would keep bad spirits away and also bring some luck. So these beliefs are there. And Baba is saying that this is now the age where lots of meetings happen. So the biggest meeting is the Brahmaputra, so Brahma meeting Shiva. Well, those two souls combining and forming Bapdada, that's what then unleashes this energy of creation, sustenance and destruction. And then we are also pulled by that. So we are then able to access Shiv Baba. We wouldn't be able to access without Brahma Baba accessing. It's like a cascading effect, and Brahma is the gate that has to open. When you
here in England we have lots of canals, and you can see how at different points there's a gate that allows the water to come in, and when the barges are going down the canal they have to get off, open the gate, and then the water rises high enough for the barge to be able to pass through, and that's how they control traffic in the river. So similarly, Brahma is that gate, and that water can't flow, we can't get through, we can't get access to Shiv Baba until that first meeting between Brahma and Shiva. And then we develop that ability to access Shiv Baba, so that's another meeting. And when Brahmins meet each other as well, we've got the meeting of rivers. Early days when Baba had become an angel, the Murlis where there was Didi Manmohini, Dedi Prakashmani, and Baba would say that they show the incognito river Saraswati. So Mama had become incognito. And so Baba was saying that that's been memorialized in Allahabad as those three rivers meeting, creating the Kumbh. But now so many rivers have become incognito and so many others have become cognito. And Baba's also referring to the names that were given to the daddies. And Baba had the thought in Karachi that it's a new birth, so really they should all receive new names. So he had asked one of the trance messengers to go to the subtle region and ask Shiv Baba for a list of names. So she came back with that. So for example, Daddy Gulzar's name was, I think, Shobha. That was her Lokik name. Daddy Prakashmani's name was Rama, I think. And Prakashmani was the name that came back from Shiv Baba. Daddy Gulzar's name that came was Hirday Mohini, so you might have seen that in some programs that name was used. So Prakashmani means the jewel of light, and Hirday Mohini means the one with the beautiful heart. And Daddy Janki's name was Manohar Shanta, Manohar Shanta. And that means the one who's managed to make their mind silent. Manohar Shanta. And also, it can also be translated as the one who wins others' hearts through their silence. So they're very appropriate for Lady Janki. But you wouldn't have heard that name because her name was Janki, and Brahma Baba wanted all of the girls to really be like sons. So his attitude towards all those girls was that they shouldn't stay dainty, they should balance. And Lady Janki used to say that she was quite a delicate girl. She was quite emotional. And Baba just turned her name into the masculine, which is Janak. So Janki is the feminine and Janak is the masculine. And Janak is remembered as being bodiless, as being liberated in life. So Baba was looking at her with that vision. So Baba and Mama, they both called her Janak all the way through. And then the other daddies just used to call her Janki Ben, Sister Janki. And so, because Baba never used that name, Manohar Shanta, it didn't catch on. And so then we just stuck with Daddy Janki, and she stuck with that. So, some of them they used it, some of them
because Brahma Baba didn't use them, then they just kept whatever Brahma Baba called them. You might even hear that sometimes Daddy Prakash Mani is called Daddy Kumarka, because Brahma Baba used to just call her Kumarka. So again, the Kumar, meaning the son. So he really saw her like a son. He trusted her. And so he looked at her with that vision. And then in the blessing, you might remember we had a slogan last week on, if you want to remove obstacles, accumulate blessings. And today, Baba is reminding us that there's an easy way to progress spiritually, and that's to accumulate blessings. So we were hearing from Baba yesterday that we've got to develop this cleanliness, this purity, this sincerity, this transparency. And we've got to handle our body in such a way. We've got to make our mind manmanabhav. We've got to make our heart sincere. And we've got to make our interactions contented without any dislike, so that we all remain light. So in this way, as we inculcate those things, then we're going to gain Baba's blessings. And Shiv Baba and Brahma Baba's blessings, they're the blessings of the parents. Mama's blessings too, so those are very important. And if they see us doing it, then we automatically gain their blessings. And then there's the blessings of Brahmin souls, and those are important as well. And then there's also the blessing of Lokik souls, so your family and others, everyone really. And then the blessings of animals and nature as well. So really, we want to try and accumulate in all accounts. I always think we want the blessings of Lokik people, the blessings of people we work with, blessings of a Lokik family, blessings of Brahmin family, and within the Brahmins you want the blessings of your elders, your juniors, your equals. So I think we have to accumulate, and it takes the power to adjust in order to gain blessings. So as Baba was saying yesterday, just clean out your motives, that's crucial. Otherwise, if you've got some level of selfishness because you're not fulfilled through yoga, then even if you're gaining blessings, you probably won't feel as content as you should. And also that you won't accumulate fully. So Baba sometimes says that if you've got a clean heart, you've got no selfish motive, you've got no ego involved in anything you're doing, then those blessings will just make you fly. If we're eating the raw fruit, so we're gaining blessings, but we have to use it as an ego boost, then we'll still be going up and down. We won't be consistently moving forward. Shanti.